So, you know how you freeze when someone asks you, tell me something about yourself, or hey, tell me about yourself. Let's change that. आज की वीडियो देखने के बाद आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नेवर एवर हेजिटेट एंड यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन एनी सिचुएशन लाइक अ प्रो, बिकॉज इंट्रोडक्शन आपके कॉन्फिडेंस के लिए क्रूशियल होता है. तो अपने आप को कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस करना सबको आना चाहिए. Hello, my lovely learners, and welcome back to the Language Wizard. I hope you guys are doing well, and my name is Zenith. Today, as promised, हमारा day 2 है of Become Zero to Fluent in 30 Days Masterclass. तो according to what I believe, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है और फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करके प्रैक्टिस किया है. तो अब आप ग्रीटिंग जानते हैं, हाउ आर यू डिफरेंट तरीके से पूछना जानते हैं, और हाउ आर यू का डिफरेंट तरीके से इन डिफरेंट सिचुएशंस रिप्लाई करना जानते हैं. तो चलो इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं. So in today's video, we are going to learn how to introduce ourselves in an informal setting and in a semi-formal setting. Semi-formal setting से मेरा मतलब है conferences में, seminars में, या फिर आप अपने colleagues को first time मिल रहे हैं. नए क्लास में जाते हैं and randomly like your teacher is like, why don't you tell me about yourself? And you freeze, right? So we are here to change that. तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव इज ग्रीटिंग. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ग्रीट ईच अदर और हाउ टू ग्रीट पीपल लाइक नेटिव स्पीकर्स. और इस वजह से हम लोग वर्ड्स यूज करेंगे जैसे कि हाय और हे. इनफॉर्मल सेटिंग में यू कैन ऑल्सो से हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग. अब नेटिव स्पीकर्स पूरा हाउ आर यू डूइंग की जगह बोलते हैं how you doing, how you doing. G last में silent हो जाता है, how you doing. Then another thing that you can say is how's it going, how is it going, how's it going. The last thing which is also very casual is what's up, what's up. ये सारी चीज़ें आप informal setting में greet करने के लिए use कर सकते हैं. Now in a semi-formal setting, you can say things like good morning or good afternoon. अब आते हैं step 2 पे. Step 2 is telling your name. अब ये बात बहुत बहुत important है. I want you guys to lean in a little bit and listen to me very 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 carefully. Whenever you are telling your name, you never ever, किसी भी situation में दुनिया इधर से उधर हो जाए, you will never introduce yourself as myself. Hi, myself Zenith. No, you will never ever say that. Instead, say things like I am or I'm. Hi, I'm Zenith. My name is. You can also say my names. My name is की जगह you can say my names. Hey, my name's Zenith. Or good afternoon, I am Zenith. Now, second part में, after telling your name, if you want to sound more polite and if you want to sound more sophisticated, for example, and this is something that the native speakers use frequently, and that is, it's a pleasure to meet you. आप किसी से मिलने के बाद बोलते हो ना कि हाय आपसे मिलके अच्छा लगा. तो in English you say it's a pleasure to meet you, or you can say nice to meet you. Hi, my name is Zenith Kazmi. It's nice to meet you. Hi, I'm Zenith Kazmi. It's a pleasure to meet you. Now in the third step, you tell a person where are you from. Alright, now there are different ways to answer this question. Simplest way is I was born and brought up in Lucknow. यानी अगर आप कहीं पैदा हुए हैं बट अभी आप कहीं और रहते हैं, then you can say my family originally hails from Lucknow, but I have been living in Canada for the past 5 years. Say I grew up in Delhi, but now I live in Mumbai. I am originally from Bangalore, but currently I reside in Delhi for work.
Step number 4, what do you do for a living? यानी कि आप काम के लिए क्या करते हो? There are different ways to answer this question. अगर आप student हो तो आप कह सकते हो I am currently enrolled in an engineering program at Delhi University. Or currently I am a science student at Delhi University. I work as a communications lecturer at Mumbai University. अब ये वाला ध्यान से सुनना because this one is for more experienced people. I have been working as a lead software developer for 5 years now at Google. अगर अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो and you are looking for a job, then you can simply say, currently I am looking for a job in marketing. Marketing की जगह जो भी आपकी फील्ड है जिसमें आप जॉब ढूंढ रहे हो, you can just add that. Now, अगर आप मेरी तरह self-employed हो, then you can say, I am self-employed. Or, I work for myself as a content creator. So, all of these 4 steps will be the same for informal and semi-formal introduction. अब आता है एक 5th part, that is education. Now, you don't talk about your education in an informal setting, but when it comes to a more semi-formal or formal setting, you have to talk about your education. So here are some ways how you can do that. I have a master's degree in psychology. I studied law at Yale University. I completed my bachelor's degree in computer science from Anna University. My schooling was from Mumbai, but I pursued higher education from America. I finished my postgraduate studies in economics last year. ये सारे sentences पूरा cover कर लेते हैं, चाहे आपने last year complete किया हो, चाहे आपने पहले complete किया हो, चाहे आप अभी pursue कर रहे हो. So I hope that is clear. Step number 6 में आप देखोगे कि native speakers हमेशा अपनी hobbies और interests के बारे में informal और semi-formal settings में बात करते हैं. And a very big reason for that is to connect with people, to make connections, to make contacts with people. आप एक common ground ढूंढते हो और usually hobbies और interest आपको वो common ground देती हैं. अच्छा, on a side note, हमने ये चीज़ देखी है कि हम इंडियंस जब भी अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं देन वी से थिंग्स लाइक आई लाइक टू वॉच फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. ये सब चीज़ें गलत नहीं हैं, बट ये आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बेसिक साउंड कराती हैं. नॉट द क्रिकेट और द मूवीज़ और वट एवर, बट द वे यू से इट. तो अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड और अच्छे तरीके से इन सेम चीज़ों को बोलना सीखेंगे. रेडी? आई एम पैशनेट अबाउट डांसिंग. इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ. In my spare time, I enjoy watching movies. I am a little partial towards thrillers. Partial का मतलब होता है थोड़ा आप किस चीज़ की तरफ ज़्यादा लीन करते हैं थोड़ा सा. जैसे कि when I said that I like watching movies, I am a little partial towards thrillers. उसका मतलब हुआ कि हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं कि हमको मूवीज़ पसंद है. Partial मतलब हमें थोड़ा सा ज़्यादा कौन से टाइप की मूवीज़ पसंद है. I enjoy watching thriller movies. I am a huge fan of football, so I mostly spend my weekends watching a game. Playing cricket is my go-to stress buster. Stress buster का मतलब कोई चीज़ जो आपके stress को बिल्कुल ख़त्म कर देती है. I like to spend my weekends exploring new restaurants and cuisines. Now, the 7th and the last step is talking about your goals. अब goals के बारे में ज़रूरी नहीं है कि आप informal या semi-formal settings में बात करें ही करें. Goals के बारे में the only reason why I am telling you about goals is in case somebody asks you about it. अगर किसी ने एकदम से पूछ लिया so what is your goal in life, तो आप बिल्कुल blank नहीं होंगे and you'll have something to say. For example, my dream is to work for a multinational company. I aspire to open my own cafe someday. My goal is to improve my public speaking skills this year.
I am working towards a leadership role in my field. Hi, I am Zenith Kazmi. I grew up in Lucknow and currently I reside in Canada. I hold a master's degree in English literature from XYZ University and I am passionate about reading books. In my spare time, I just like to curl up with a nice, good thriller or romance and a good cup of chai. Good afternoon. My name is Megha Tripathi and I was born and brought up in Lucknow. I hold a master's degree in computer science and in my spare time I enjoy painting and trying out new cuisines. My goal in life is to start my own company someday.